नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं तंदुरुस्ताय नमः। जो हमारे मेन सर हैं डॉक्टर रिजू मैथ्यू, जो कि फाउंडर एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी के। तो हम उनसे इसी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for inviting me here. I'm happy to contribute to this particular cause. सर, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी का इंडिया में क्या स्कोप है? सो आपने सुना होगा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में। ये एक नया ब्रांच है क्लिनिकल रेडियोलॉजी में, इन प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी। ये प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी मार्कर्स यूज़ कर उस इस्तेमाल करके रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी को रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने के, किसी को सिरोसिस आने वाला है, सिर्फ किसी को हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरीज आ सकता है, किसी को कैंसर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। वो रेडियोलॉजी में काफ़ी मोडालिटीज़ है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, मैमोग्राम है, एमआरआई है। ये काफ़ी मोडालिटीज़ जो इस्तेमाल करके रेडियोलॉजी बायोमार्कर्स की तरफ से ये हाई रिस्क ग्रुप स्ट्रैटिफिकेशन करने के लिए कोशिश करते हैं ये प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी में। ये फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में काफ़ी सुना ही होगा, काफ़ी बार देखा होगा, फैटी लीवर है। Last 20-25 years, radiologists have reported fatty liver, and of late, fatty liver has increased all over the country. And 5% of fatty liver patients goes for cirrhosis. लिवर ट्रांसप्लांट प्लांटेशन का लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ज़रूरत पड़ता है. So how can we know which is that high risk group in fatty liver going in for cirrhosis? ये लिवर एलास्टोग्राफी है, रेडियोलॉजिकल मोडालिटी है, नया मोडालिटी है। लिवर एलास्टोग्राफी के मदद से ये लिवर स्टिफनेस, कौन सी लिवर फैट आने के बाद लिवर का स्टिफनेस ज़्यादा पड़ता है। वो स्टिफनेस ज़्यादा हो तो फाइब्रोसिस होता है, इसके बाद सिरोसिस में चलता है। सो वी विल बी एबल टू डिटेक्ट दोज केसेस ऑफ फैटी लिवर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फाइब्रोसिस। एंड वन गुड थिंग इज वो अर्ली स्टेजेस में फाइब्रोसिस है वो रिवर्सिबल है, that can be brought back and their risk can be reduced. Otherwise, these people all of a sudden will realize that I've got cirrhosis. That has happened all over the country. Non-alcoholic fatty liver disease, it is there in more in females also. Females who have never even touched alcohol sometimes coming up with cirrhosis, and of course with alcohol the incidence definitely goes up. सर, आपने कहा इलास्टोग्राफी के बारे में, तो हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए कि इलास्टोग्राफी एक्चुअल में क्या है? ये इलास्टोग्राफी एक रेडियोलॉजिकल मोडालिटी है। ये इसमें 2D शेयर वेव इलास्टोग्राफी करते हैं हम। इससे लिवर स्टिफनेस, लिवर का हार्डनेस हम वी आर एबल टू क्वांटिफाई इट। एक वैल्यू किलो पास्कल्स में लिवर स्टिफनेस वैल्यू वी कैन मेजर इट, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड बट वी डू ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी। एंड लिवर का स्टिफनेस, वो जो फैटी लिवर होते हैं इसमें लिवर इलास्टोग्राफी भी करना पड़ता है। इसके वजह से लिवर स्टिफनेस वैल्यू ज़्यादा है तो सिरोसिस का, फाइब्रोसिस का, लिवर कैंसर का चांसेस ज़्यादा होता है। सो 5% ऑफ फैटी लिवर पेशेंट्स विल गो फॉर लिवर सिरोसिस. So if there is an opportunity here for radiologists to screen the population to know who is at high risk for cirrhosis. If we can detect that group, we can reduce their risk by even reversing that early stage group. Otherwise, what will happen in next 20-25 years? Many people we have detected fatty liver, and 5% of it. And fatty liver incidence is quite high. I come from a state of Kerala. Punjab also may not be different. Our incidence is quite high. In these two states, liquor consumption also is on the higher side. So the incidence of fatty liver is high. In study that we conducted in Thiruvananthapuram, 49% of adult population above the age of 20 years में fatty liver है. इसका मतलब क्या है? 1 out of 2 has got fatty liver, out of which 5% goes for cirrhosis. Means 20 years down the line there is a large number of people who will require liver transplants. So अभी क्या कर सकते हैं? फैटी लिवर केसेस में हम लिवर एलास्टोग्राफी, सोनो एलास्टोग्राफी करके उसका फाइब्रोसिस, लिवर स्टिफनेस वैल्यू ये ज़्यादा है तो
मेडिकल इंटरवेंशंस एग्रेसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. अर्ली हो है तो मेडिकल इंटरवेंशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये हाई रिस्क ग्रुप कैन बी ब्रॉट डाउन टू लो रिस्क ग्रुप, एंड दैट इज गोइंग टू मेक ए ह्यूज impact on our health economics and also on the health of the nation. एमोग्राफी से ये कैसे डिफर करता है? मेमोग्राफी एक्सरे से करता है, और अभी एक्सरे मेमोग्राफी और सोनो मेमोग्राफी दोनों भी करना पड़ेगा. एंड देन वी आर गिविंग द रिपोर्ट विथ बोथ द मोडालिटीज यूज. बोथ आर रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज, बट देन वी कैन डिटेक्ट early cancers, and after biopsies we can prove them, and if it is detected early, as I mentioned earlier, the survival rate is quite high, and cancer breast is also on the rise in India. All these non-communicable diseases, I must say, there are for certain risk factors like obesity, like diabetes, like hypercholesterolism, like lack of exercise. ये 4-5 risk factors are common for most of the non-communicable diseases, like including cancers, even liver dysfunction, everything. So all these are on the rise, and radiological modality, we call them radiological biomarkers to screen the high for the high risk population in non-communicable disease. यही है preventive radiology का gist. Preventive radiology, what is it attempting? Diagnostic radiology is when you go to a doctor as a part of workup. करते हैं ये मोडाइल अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, और इंटरवेंशन भी ऐसा एक प्रोसीजर करते हैं क्योर के लिए और डायग्नोसिस के लिए. बट प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी में सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, वो उसका थोड़ा रिस्क है. वो रिस्क रेडियोलॉजी मोडालिटीज इस्तेमाल करके रिस्क का क्वांटिफिकेशन करता है. ये ज़्यादा रिस्क है और माइल्ड रिस्क है. और इफ इट इज़ इन द हायर रिस्क ग्रुप, वी कैन make them aware. The healthcare team can reduce their risk with lifestyle modifications, medical interventions and treatment. So that is where the preventive radiology plays. It's an asymptomatic patient with high risk factors, but we can further stratify their risk with the help of radiology biomarkers for non-communicable diseases like cancers, coronary artery disease, liver dysfunction, kidney dysfunction, etc. So this is the gist of preventive radiology. लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ पे बहुत से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं. आप ये जो इलास्टोसोनोग्राफी की मशीन्स हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही चला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? See, we have to address this as a problem of fatty liver disease, not as a gastroenterologist or radiologist issue. So there is a increasing number of people with fatty liver disease in Punjab, of which 5% will inevitably go for cirrhosis. So how to identify that group? Previously to identify the fibrosis or the liver stiffness, the only way out was putting in a needle and take a biopsy. That is an invasive procedure. So there are then MR elastography is another technique that with MRI, but that is costly, not available anywhere, many places in Punjab. Then there is a fibroscan. There is a transient vibration controlled transient elastography. That's a technique that came earlier, which is widely available, but it's a blind technique. There is 2D shear wave liver elastography, sono elastography. हम जब इधर वर्कशॉप करते हैं, ये 2D shear wave liver sono elastography के, इसमें क्या है, हमको देख रहे हैं, ये लिवर दिख रहे हैं, ये एंड द लिवर स्टिफनेस वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. और फाइब्रोस्कैन में क्या है, ब्लाइंड टेक्निक है, मालूम नहीं पड़ेगा वो लिवर से है और एब्डोमिनल वॉल से वैल्यूज है, और इफ देयर इज ascites fluid in the liver and all, you may be going wrong. So 2D shear wave liver elastography, sono elastography is much more superior technique, which is more specific also. And now with this new technology, we got motion stability index, reliability index, काफ़ी quality parameters भी साथ में है. ये फाइब्रोस्कैन से भी ज़्यादा क्वालिटी पैरामीटर्स से लिवर स्टिफनेस वैल्यूज़ स्पेसिफिक होता है, और कौन सी रेंज में आता है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर में आता है. एंड मोर ओवर व्हाट आई फील इज़ we have to see this in the perspective of a large disease burden. But whichever modality you are doing it, we have to screen a large number of population for it.
Whether you do it a fibroscan, whether you do it a shear wave elastography, whether you do it with MR elastography, a large number of population has to be mandatorily screened. इसलिए मैं कहता हूँ डिसीज आने में 4 components है. Genetics is one. Genetics much we cannot do much. Your genetics is different, my genetics is different. Environment is different. Environment में क्या है, water quality, air quality, food quality, all these pollutions, all these things comes. Government is making effort, but in spite of that, we in India, suppose I say, if you look at the air quality in London, it may be 2, it may be 50 or 100 in Punjab or in any part of India. So definitely we have got a compared to the developed nation, अपना air quality थोड़ा कम होगा, but that is considerably improving as the nation moves from developing to developed nation. We can't do much about it. It is a process that is happening at the socio-economic level, at the government levels. Third is lifestyle and habits. ये individual choice है. फिर भी there can be errors that can happen at individual level. Habits, sometimes it's difficult to change habits. वो disease cause करते. But preventive radiologist के तरफ से हम एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर को रेकमेंड करते हैं गवर्नमेंट्स के लिए, ये स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन मैंडेटरी करना पड़ेगा. अपना जब इंडिपेंडेंस मिला उस समय इंडिया में एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36 ईयर्स था. ये 36 ईयर्स है, अभी वो 69 ईयर्स आ गया अभी 75 ईयर्स के बाद. But health span is different. Lifespan will increase when the socio-economic conditions improve. But health span is disease-free lifespan. जब 90 years तक रहता है, but from 40 years onwards he is always sick, means his health span is poor. You understood the concept. So health span कैसे improve करते हैं? Screening for early detection has to be made mandatory. That is where mammography in the say 40 years above age group, if they compulsorily go for a mammography, in early stages of breast cancer can be detected and treated, and their quality of life, and they go into a better health span with better lifespan. So screening and early detection mandatory करना पड़ेगा. यही है preventive radiology का गवर्नमेंट के लिए और हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ के लिए हम चाहते हैं, ये मैंडेटरी करना पड़ेगा. ये 4 components है: genetics, environment, lifestyle and habits, and essentially screening for early detection. आपने स्क्रीनिंग की बात करी, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनके लिए वो आप कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हो कि वो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का? See, India has got an urban, and we are a huge population, 1.4 billion people, 140 crore people in this thing. So definitely our healthcare infrastructure has to improve to give services. But ये digital India whole चल रहा है अभी. ये services का benefits we can utilize the digital health infrastructure to reach out to the rural population, and also we should have a committed healthcare team to give the benefits to the rural population also. आपकी एसोसिएशन कोई इस तरह का चैरिटी प्रोग्राम भी कंडक्ट करती है? से हम रेडियोलॉजी एसोसिएशन का एक अलग प्रोग्राम है संरक्षण एक भारत में इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम करने के लिए, पेरिनेटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन हाई रिस्क ग्रुप स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ मदर्स एंड बेबीज विथ fetal growth restriction and preeclampsia. Preeclampsia means high blood pressure after 20 weeks. ये प्रोग्राम इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन 38 सेंटर्स 16 स्टेट्स में कर रहा है. अभी भी हम एक रिसर्च भी पब्लिश किए इंडियन जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में. 80% reduction is possible, and we do a lot of free services in Guna district in Madhya Pradesh. Dr. Lily Sharma काफ़ी फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये स्क्रीनिंग फॉर प्री एक्लैम्सिया एंड FGR करके काफ़ी रिडक्शन हो चुका वो गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये 5 स्टेट्स काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस स्टैटिस्टिक्स में. So we are working on these particular states on this. Similarly, if you look at preventive radiology on fatty liver, cancers, coronary artery disease, heart disease, states like Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab,
there is an increase. So we are working in these areas to make more awareness and टारगेट ऑडियंस की बात करिए तो वो कौन है आपकी? high risk group individual. Who is the high risk group individual? Those who are having high consumption of alcohol in this particular case, obesity, high cholesterol, sedentary life, diabetes, family history of family history of any of the cancers. So all these are high risk group, and above a certain age, whenever we come across in this particular case of fatty liver, some long standing fatty liver with changes in enzymes, it is essential to screen them for liver sonography, elastosonography, and understand their risk on a हम बात करें fetus in low birth rate, what is the role of elastosonography? birth rate में नहीं है. And the elastosonography is relevant for applications in liver basically. Birth rate that is a different use. That is for Dopplers. We are using Dopplers in that to stratify that risk. For Dopplers of the uterine artery and the mean pressure of this lady, it's combined and we calculate the risk of the mother for developing any high blood pressure during pregnancy and for the fetal growth restriction for the baby. Then we will be able to realize if they are at the high risk group, we give them low dose aspirin, 150 milligram, and we have seen an 80% reduction of preeclampsia and fetal growth restriction in the last 4 years, and that has been a published data in Indian Journal of Radiology and Imaging. हाँ, हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी एक माध्यम है, एक मोडालिटी है. With the help of that, we can do screening for most of the non-communicable diseases. So screening करना ही पड़ेगा. Those with the high risk group should undergo screening for early detection. Don't wait till the disease hits you at the last stage because nothing much can be done. Early stages में detection करते हैं, survival rate, cure rate and quality of life will be better. Prevention is always better than cure. डॉक्टर रिजू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for thank you. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रिजू मैथ्यू, जिन्होंने प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी के बारे में बताया, और इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें तंदुरुस्ताई नमः के साथ. नमस्कार.